सी स्टूडेंट्स आज आम केमिकल एनर्जेटिक्स उपरे केते मल्टीपल चॉइस रो क्वेश्चन सॉल्व करवा। फर्स्ट क्वेश्चन होची एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हिच वन इज ट्रू फॉर द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चार्टा ऑप्शन देछि तो चार्टा ऑप्शन रो कोनटा ठीक हम। तो आमे जानी डेल्टा एन गोटे रिलेशन अच्छी डेल्टा एन आउ डेल्टा एच डेल्टा ई भितर गोटे रिलेशन अच्छी से डेल्टा एन जोटे माइनस थी देख सॉल्व करछि जो डेल्टा एन टा माइनस थी से कौन आसो ना आमर नेगेटिव वर्क आसो। डेल्टा एन जो माइनस थी नेगेटिव वर्क आसो। सो नेगेटिव वर्क मान कौन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो से कौन हम डेल्टा ई टा इनक्रीज हम। ओके सो डेल्टा ई टा इनक्रीज हम दैट मीन्स डेल्टा ई इज इनक्रीज टू डेल्टा एच। तो चॉइस टा कोडा डेल्टा ई इटा चॉइस बी टा चॉइस। तो एग्जैक्ट फोर्थ क्वेश्चन भी सेमिति अच्छी देखो फोर्थ क्वेश्चन भी सेमिति अच्छी फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गिविंग नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गिविंग एमोनिया व्हिच वन इज करेक्ट। ये भी कौन अच्छी ए साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसी अच्छी सॉरी कम अच्छी एपटे बेसी अच्छी एपटे दुईटा अच्छी एपटे चार्टा अच्छी 1 + 3 चार्टा अच्छी। तो डेल्टा एन केते आसीबो 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आसीबो। तो डेल्टा एन डाइट माइनस आसला तो ये भी कौन हम डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो 4 नंबर क्वेश्चन भी आंसर कौन हम डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आसीबो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम 2 नंबर क्वेश्चन देखिबा when 1 mole of ammonium hydroxide is neutralized by 1 mole of HCl heat evolved is केते heat evolve हो 1 mole of ammonium hydroxide is neutralized by 1 mole of HCl then heat evolved केते ना आमे जानचंदी गोटे स्ट्रॉन्ग एसिड और गोटे स्ट्रॉन्ग बेस जो न्यूट्रलाइज हम से 57.2 किलो जूल हीट आमर रिलीज हम। ओके तो आर 1 इक्विवेलेंट HCl रो 1 इक्विवेलेंट आउ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl स्ट्रॉन्ग बेस NaO जदि होता आमर 57.2 किलो जूल हीट आमर रिलीज होता। तो ये कौन हो जेहेतु अमोनियम हाइड्रोक्साइड गोटे वीक बेस ताले कौन हम आमर जो 57.2 किलो जूल रु किछि एनर्जी कौन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेहेतु वीक ताकू डिसोसिएट करिया लगे एटा थ्योरी मु तुम कही। तो आर आंसर हम 57 लेस देन 57.2 किलो जूल कमे ना 57.2 किलो जूल रु किछि एनर्जी आमर कौन हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करने हेल्प कर तेणु से कमिज। नेक्स्ट क्वेश्चन होची मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ इथानॉल थर्ड क्वेश्चन is 110.4 kilojoule. Its specific heat capacity is how much? तो आम रिलेशन अच्छी कौन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलार हीट कैपेसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। एटा होची रिलेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मोलार हीट कैपेसिटी बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोलार हीट कैपेसिटी केते अछि 110.4 मॉलिक्यूलर मास होची 46 तो डिवाइड कले 2.4 आस। तो हमारा आंसर हम 2.4 इटा। फोर्थ क्वेश्चन फॉर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन तो डिस्कशन कले। फिफ्थ क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन कोडा और इंटरनल एनर्जी गोटे स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q + W थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट ला
तो यहाँ हम तुम आंसर। देन 6th नंबर क्वेश्चन, when a liquid boils there is an increase in dash, increase कोटा increase हो, free energy, kinetic energy, potential energy, heat of evaporation कोटा increase हो ना मॉलिक्यूल गुड़िक जो कि एनर्जी पाइबे, वाटर मॉलिक्यूल जो एनर्जी पाइबे से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो। नेक्स्ट, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी मे बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आम जानते इक्विलिब्रियम पोजिशन रे, इक्विलिब्रियम पोजिशन रे आम कौन हम एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंजटा कौन हम, एंट्रोपी चेंज रो डेफिनेशन को तुम मन पकेब। तो एंट्रोपी चेंज रो डेफिनेशन होची डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो यहाँ हूँ आंसर, सब मन पकेब व्हाट इज एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी माने डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू रिवर्सिबल हीट सप्लाइड रिवर्सिबली और टी हूँ एब्सोल्यूट माने टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रोसेस हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू हाइड्रोजन एटम मान डिसोसिएट होइछे, the sign of delta H and delta S represents as values, तार वैल्यू कौन रहबो, पॉजिटिव ना नेगेटिव रहबो। जेहेतु यहाँ हूँ चार्टा चॉइस देछि, फर्स्ट चॉइस पॉजिटिव नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ नेगेटिव पॉजिटिव। जेहेतु आम ये जानते गोटे कौन एक्जो एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको हीट देले जाइए आमर एटा डिसोसिएट हम। तो फास्ट एंडोथर्मिक प्रोसेस माने डेल्टा एचटा पॉजिटिव आसो, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आम दुईटा चॉइस रहा, ये दुईटा ऑप्शन रहा। तापर आम डेल्टा एस को एंट्रोपी कौन ना यहाँ आउरी डिस्टर्बेंस डिजॉर्डरनेसटा बढ़ी जीवो, तो ये कौन आसो, यहाँ आसो बी आसो। नेक्स्ट हूँ एंट्रोपी फॉर एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस इज हाउ मच। एंट्रोपी फॉर एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबेटिक मीन्स heat remains constant, heat of the system remains constant। तो ये कौन हम रिवर्सिबल प्रोसेस रे एंट्रोपी केते हम, एंट्रोपी ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस इज 0 आसो सब, हीट रिमेन्स कांस्टेंट मीन्स प्रोसेस एंट्रोपी 0। नेक्स्ट, फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एचटा केते हम, एंथैल्पी चेंजटा केते हम। आमर गोटे रिलेसन, ए रिलेसन तुम जानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी, ए रिलेसनटा हीट एंथैल्पी इज इक्वल इंटरनल एनर्जी प्लस पी डेल्टा पी, एटा हूँ वर्क डन। तो ये इट इज द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी कौन कौची, एंथैल्पी कौची जे एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम केते, तो से अनुसार आमर कौन आसो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी आसो, एटा डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फॉर ए केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम डेल्टा एच इज इक्वल टू हाउ मच। तो प्रेशर और वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट हेल्टे डेल्टा एच कौन आसो डेल्टा ई प्लस डेल्टा भी, एटा रिलेसन हेल्ले प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा भी डेल्टा भी 0 हो, डेल्टा भी 0 है, यहाँ 0 हो, देयरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई आसो। तो 11 रो डेल्टा ई आसो आंसर। नेक्स्ट, इन एन isothermal expansion of an ideal gas, isothermal expansion of ideal gas कौन हम डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, isothermal expansion डेल्टा ई टा 0, इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच इज हाउ मच। डेल्टा एच और डेल्टा ई भितर आम रिलेसन कौन अच्छे फास्ट देखा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा पी, पी डेल्टा पी जगह आम डेल्टा एन आर टी पके पार। ओके, तो डेल्टा एन के नंबर ऑफ
प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स तो एटा होची 2 एटा होची 4 तो -2 आसला तो ये -2 टा आमे डेल्टा n जगह पके देले कोन आसीबो डेल्टा n डेल्टा e -2 RT आसीजो ओके एटा दुईटा मॉलिक्यूल एपटे अछि चारटा मॉलिक्यूल अछि तेणु 2 - 4 इज इक्वल टू -2 आसला नेक्स्ट क्वेश्चन if equilibrium constant K is 10 the delta G standard free energy the delta G is in kilojoule per mole will be केते आसीबो पचाउछि तो r रो वैल्यू देछि t रो वैल्यू देछि ताको हम सॉल्व करबा कोन रिलेशन ना डेल्टा G is equal to डेल्टा G 0 plus 2.303 RT log K तो एटा 0 हो डेल्टा G टा 0 हो डेल्टा G 0 होची स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी 2.303 जगह 2.303 R वैल्यू देछि T रो वैल्यू 300 log K रो वैल्यू 10 देला log 10 मींस 1 तो एटा 1 हे जिवो तो आसला डेल्टा G 0 यदि ए सब जगह हम एपोर्ट नहीं जिबा ताले एटा माइनस पळे आसो -2.303 मल्टीप्लाइड 8 multiplied 300 is equal to this much एति हम पाइले नेक्स्ट क्वेश्चन if delta H V heat of evaporation of a liquid at its boiling point -173 degree centigrade is 8.4 kilojoule per mole then its delta S एटा होचे entropy change केते आसियो पचाउछि तो आंसर होची 84 the delta H with relation अछि entropy enthalpy of evaporation और entropy of evaporation with relation अछि कोन ना entropy of evaporation is equal to enthalpy of evaporation multiplied temperature evaporation रो temperature केते next question होची 1 mole of a non-ideal gas undergoes a change of state 2 atmosphere 3 liter 95 Kelvin to 4 atmosphere 5 liter 245 Kelvin with a change in internal energy delta U delta U केते जगह नै होची delta E भी नउछंदी 30 liter atmosphere the change in enthalpy delta H of the process in liter atmosphere is how much ता रिलेशन अछि कोन delta H is equal to delta U plus P delta V delta H is equal to delta U but delta E plus P delta V रिलेशन अछि तो हमें डायरेक्ट एमिदी करि परिबा एटा होची इजी मेथड डेल्टा U plus P2 V2 minus P1 V1 एटा को हमें भी नहीं परिबा तो P2 V2 होची 20 P1 V1 होची 6 काहे कि एटा होची देखो से देछि P2 V2 केते आसीबो ना P2 V2 रे तमरा आसीबो एटा 4 multiplied 5 4 multiplied by 20 एटा आसीबो 2 into 3 6 आसीबो तो 20 minus 6 is equal to 14 plus ये u डाउची 30 तो तमर पाइलो केते 44 पाइलो नेक्स्ट होची the bond energies of C single bond C double bond H single bond CH single bond linkage are this much is value दे देला the heat of hydrogenation of ethylene केते पचारछि heat of hydrogenation तो हम कोन करबा heat of hydrogenation रे हमें फर्स्ट रे तार फॉर्मेशन रा देखिबा इथालिन रा हाइड्रोजनेशन केमिति होछि एटा इथालिन प्लस हाइड्रोजन मिसिकरी इथेन तयार हैला आर देछि 600 ये होछि 400 ओके एटे किंतु केते आसला एटा सिंगल वैल्यू पई देछि 350 सी सिंगल बॉन्ड रो 350
हाइड्रोजन कौन हो एक्सट्रा दीटा आम एड हो CH जो CH बॉन्ड एक्सट्रा दीटा एड हो तेणु आम कौन कर 4 10 मल्टीप्लाइड 2 तो ये दीटा मिसेवा मिसेला आसला ये तो आमर पचार हाइड्रोजिनेसन पचार इथारेन हाइड्रोजिनेसन पचार तेणु आम कौन करवा दिस मच माइनस दिस मच ओके दिस मच माइनस ये पचारा यहाँ फर्मेसन जब इथेन फर्मेसन पचार ताले एटा माइनस एटा करते हाइड्रोजन पचारा तेणु एटा माइनस एटा कले आमर आसो 170 किलो जूल पर मोल इनवर्स किलो जूल पर मोल। लास्ट क्वेश्चन an ideal gas expands in volume from 1.10⁻³ meter cube to 1 multiplied 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 এটা 1 নাই 10 to the power minus 2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure of 1 into 10 to the 5 Newton meter square per meter square. The work done is how much? पचार वर्क डन केते तो आम रिलेसन जानते वर्क डन टा सब प्रेसर वॉल्यूम सहित रिलेसन अच्छी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1 ये माइनस कहीं ना वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन हो तो ये कौन आसो पी रैल्यू आम पकईदे ओके तो पी रैल्यू पकईदे V2 केते अच्छी एतिक अच्छी V1 केते अच्छी एतिक अच्छी तो आसला आमर कौन माइनस 10 to the power 5 एटा को समाधान कले हो 9/1000 हो तो 10 to the minus 3 ये प्लस 5 अच्छी केते आसला मल्टीप्लाई कले माइनस 900 न्यूटन मीटर एटा आसला 1 न्यूटन मीटर जूल 1 जूल तो यहाँ जूल पड़े आस 900 ओके स्टूडेंट्स।